innovators, academia, students, media, officials from the Government of India and Ministry of Electronics and Information Technology, and other stakeholders and distinguished guests. After a very successful G20 summit under its presidency, when India's power of digital public infrastructure was recognized by the whole world, India is now hosting GPAI Summit 2023, where India looks forward to working with the global community in finding solutions, ways and means to use artificial intelligence for building solutions for societal problems in healthcare, agriculture, and education. We also look forward to working with the global community in bringing consensus to address the risks associated with artificial intelligence and secure, safe, trusted, responsible artificial intelligence solutions. I now invite Shri Rajiv Chandrasekhar, Honorable Minister of State for Electronics and Information Technology, to present the welcome address. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Minister Hiroshi Yoshida of Japan, outgoing chair of the GPAI, Minister Ashwini Vaishnav, Excellencies, my colleagues in the Government of India, Shri Krishnan, delegates, AI practitioners, students, ladies and gentlemen. Namaste. It is my proud privilege to welcome you to this Global Partnership of AI Summit 2023 in New Delhi. This is certainly one of the most awaited AI events in the year. We are meeting in exciting times. In just the last 18 months, AI as we knew it has been catapulted into a new orbit, creating opportunities unprecedented in history, and of course, creating some legitimate concerns of safety and responsibility. As host country, we ourselves have seen the power of tech in the last 9 years since our Prime Minister launched Digital India, and we have seen close hand how technology has transformed the lives of our citizens and deeply transformed for good democracy and governance while catalyzing digital and innovation economy, entrepreneurships and startups. The unprecedented digitalization and commitment to tech has made India one of the fastest and most exciting innovation ecosystems in the world, with over 100,000 startups and 108 unicorns created in the last few years alone. India under Prime Minister Narendra Modi ji is all in for all emerging technologies and is committed to exploiting AI to ensure advancements in healthcare, agriculture, governance, language translations, and many other real-life use cases as a natural expansion of our India GPAI framework of solutions. Artificial intelligence is without doubt one of the greatest inventions of our times. There is much good that can come from AI, whilst being aware and cognizant of the trends of harms and criminalities that also are enabled by AI, like misinformation, deepfakes, and malicious models. GPAI is a coming together of nations that can work together to shape the future of AI, to give a framework that enables the good of AI for all our people, while ensuring clear and accountable guardrails that ensure safety, trust, and responsibility are put in place. So today and the next 2 days, delegates from over 28 countries will have conversations around this, various topics and sessions that could and hopefully will lead to a global framework and a much better understanding amongst like-minded nations about the present and the future of AI. I thank all of you for being here. I welcome you again to the GPAI Summit 2023 and wish you many successful conversations. Thank you. Jai Hind. Thank you, Honorable Minister of State Meti, Shri Rajiv Chandrasekhar. And now I humbly request Honorable Minister of Outgoing Chair of GPAI, Mr. Hiroshi Yoshida, to kindly address the gathering.
His Excellency Prime Minister Narendra Modi, His Excellency Minister Vaishnav, His Excellency Minister Chandrasekhar, Honorable Ministers, distinguished delegates, and ladies and gentlemen, good evening. My name is Yoshida Hiroshi, Vice Minister for Policy Coordination at the Japanese Ministry of Internal Affairs and Communications. It is a great pleasure and honor for me to speak here today, representing GPAI outgoing chair country of Japan. First of all, I would like to congratulate the Government of India for this glorious opening ceremony of GPAI Summit 2023 with the presence of Honorable Prime Minister Modi. As we all know, AI technology quickly evolves, and this year we witnessed the rapid progress and spread of generative AI across the society. Since the technology affects all people across the society, AI governance needs to be discussed in a multi-stakeholder approach. GPAI is the initiative where all stakeholders, including AI experts and government officials, work together, and that is why Japan puts so much importance on GPAI. At the GPAI Summit Tokyo last year, we held many side events to encourage GPAI experts to interact with each other and deliver messages to the rest of the world. This year, India is hosting the AI Expo in addition to many side events, and we see many private sector participants joining the GPAI Summit. This must be a great step forward for GPAI, and I appreciate India for this marvelous leadership. On generative AI, Japan has taken the G7 presidency this year and launched the Hiroshima AI process to discuss how to promote safe, secure, and trustworthy development and use of advanced AI systems such as generative AI. On the 1st of December, G7 digital and tech ministers agreed on the Hiroshima AI process comprehensive policy framework. This comprehensive policy framework consists of OECD's report towards the G7 Common Understanding on Generative AI, International Code of Conduct for organizations developing advanced AI systems, International Guiding Principles for all AI actors, as well as project-based cooperation with the GPAI and other international organizations. This policy framework is the first international framework aimed at promoting safe, secure, and trustworthy development and use of advanced AI systems. And we hope this framework will develop to the foundation for global AI governance. I believe that the fundamental concept of human-centric AI underlying the Hiroshima AI process is already shared among the GPAI member countries and observers. AI was also discussed in IGF Kyoto this October, including high-level multi-stakeholder AI session and GPAI session. I'm looking forward to exchanging views with you on cooperation on generative AI here in GPAI Summit. Excellency, I would also like to take this opportunity to express my deepest gratitude to the member countries, observers, and others for your cooperation in administrating the GPAI under the Japanese lead chair since last year's GPAI Summit. Japan will remain committed to contribute to the GPAI next year and onwards. Japan proposes to establish the GPAI Tokyo Center as a new GPAI Expert Support Center to further contribute to the GPAI's activities. Excellency, with this inaugural ceremony, Japan hands over GPAI lead chair to Indian government. India took the G20 presidency this year and successfully reached an agreement on the G20 New Delhi Declaration. This demonstrated India's strong leadership
in international discussions in many fields, including AI. Japan supports India's efforts to expand the membership of GPAI to include more partners from the Global South, as well as to encourage more interaction among various stakeholders. Japan looks forward to working with the chair of India. Thank you very much. Thank you, Mr. Hiroshi Yoshida. And now I would like to invite Shri Ashwini Vaishnaw, Honorable Minister for Electronics and Information Technology, to present his address. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Minister Shri Rajiv Chandrasekhar ji, Excellency Hiroshi Yoshida-san, distinguished delegates. I am honored to welcome you at the Global Partnership on AI, that is GPAI Summit 2023. This summit marks a significant moment for international collaboration on AI. As chair of GPAI, India offers this platform to foster effective global cooperation on AI. Wide-ranging disruptive technologies such as AI raise a fundamental question. How should the society respond to such technological developments? India's response is defined by our Prime Minister's vision of democratization of technology. India believes in harnessing the potential of AI for inclusive growth. This vision translates into AI use in various sectors. For example, serving citizens in native languages through the Bhashini language tool, providing personalized learning experience to students, making healthcare accessible through AI-powered diagnostics, improving yield and resource management through precision agriculture techniques, and many of these solutions are at display in the expo. We believe that AI has the potential to address global challenges and improve lives across the world. Through collaboration, we can leverage this powerful technology to create a better future for all. However, AI also presents wide-ranging challenges. Technologies such as AI are not amenable to geographic boundaries. Addressing these challenges should be our collective concern. Under India's presidency of the G20, the New Delhi Leaders' Declaration emphasized the commitment to leverage AI for public good. And in GPAI Summit 2023, we all have an opportunity to take this G20 commitment forward. Over the next 3 days, we will all benefit from the perspectives of experts and experience of government, academia, and industry. We hope to arrive at a consensus on a response through this dialogue and discussion. My best wishes to all the delegates and participants. I am confident that deliberations at GPAI Summit 2023 will bring out the best practices and uses of responsible AI. Thank you very much. Thank you, Shri Ashwini Vaishnaw, Honorable Minister for Electronics and Information Technology, for throwing light on India's vision for GPAI Summit 2023. And now I take this opportunity to request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to inaugurate the GPAI Summit 2023 by pressing the button on the remote. In the whirlwind of innovation, artificial intelligence emerges as a frontier where exponential growth transforms imagination into reality. Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, India utilizes AI across diverse fronts, from serving citizens in their languages to personalizing education, enhancing healthcare accessibility, and technology-enabled agriculture, promising to uplift the lives of the common man and poor by providing affordable access to essential services. Its growth model prioritizes equity and inclusivity, ensuring that no one is left behind when innovation takes the lead. In the realm of AI, India fosters a universal understanding, steering the technology towards humanity's betterment.
As a founder member of Global Partnership on Artificial Intelligence, GPAI, India actively contributes to responsible AI development. The GPAI is a multi-stakeholder initiative which aims to bridge the gap between theory and practice on AI by supporting cutting-edge research and applied activities on AI-related priorities. Since joining as a founding member on June 15, 2020, India has been pivotal in advancing GPAI's global goals, actively contributing to responsible AI development, deployment, and adoption of open, safe, secure, and accountable AI. India has strategically fostered a leading ecosystem for safe and trusted artificial intelligence, boasting a robust workforce, dynamic startups, pioneering R&D centers, and serving as a key access hub to extensive data sets. India triumphs in global AI rankings, securing the top spot for AI skill penetration and GitHub AI projects, while claiming the 5th position for private investment and newly funded AI companies as highlighted in the Stanford AI Index Report 2023. India, a leading global South economy, assumes the crucial role of GPAI lead chair for 2024 under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi. This alliance of nations is poised for redefining the trajectory of AI, transcending geographical boundaries and fostering inclusive development. We want India to become a global hub for AI. Our approach to this is powered by core principle of teamwork, trust, collaboration, responsibility, and inclusivity. It remains our collective responsibility to ensure trust in how AI is used. Algorithm transparency is key to establishing this trust. Equally important is accountability. India hosts the 2023 annual GPAI Summit from December 12th to 14th. The summit shapes the future of trustworthy AI through leadership meetings, startup competitions, and research symposiums. The Global AI Expo fosters innovation and dialogue among government officials, industry experts, and investors. GPAI unites 28 countries and the EU to responsibly guide AI development and usage. Leading as the chair of GPAI, India is committed to ensure safe and trusted AI globally. The GPAI's proposed priorities for 2025, spanning across climate action, healthcare, resilient societies, sustainable agriculture, and collaborative AI for global partnerships. Steered by India's helm at the GPAI 2023 Summit, let's collectively shape a future where technology, guided by the trustworthy AI development, serves humanity, ushering in the era of positive global impact. Respected ladies and gentlemen, I now make a humble request to the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to address the august gathering. Please welcome Honorable Prime Minister. केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, राजीव चंद्रशेखर जी, जीपे के आउटगोइंग चेयर जापान के मिनिस्टर हिरोशी योशिदा जी, मेंबर कंट्रीज के अन्य मिनिस्टर्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि अगले साल भारत इस समिट की अध्यक्षता करने जा रहा है।
ये समिट एक ऐसे समय हो रही है जब एआई को लेकर पूरी दुनिया में बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है। इस डिबेट से पॉजिटिव और नेगेटिव हर प्रकार के एस्पेक्ट्स सामने आ रहे हैं। इसलिए इस समिट से जुड़े प्रत्येक देश पर बहुत बड़ा दायित्व है। बीते दिनों में मुझे अनेक पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्री लीडर से मिलने का अवसर मिला है। मैंने उनसे मुलाकात में भी इस समिट की चर्चा की है। एआई के प्रभाव से वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां कोई भी छूटी नहीं है। हमें बहुत सतर्कता के साथ, बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। और इसलिए मैं समझता हूं इस समिट से निकले विचार, इस समिट से निकले सुझाव पूरी मानवता की जो मूलभूत मूल्य है उसकी रक्षा और उसको दिशा देने का काम करेंगे। फ्रेंड्स, आज भारत एआई टैलेंट और एआई से जुड़े न्यू आइडियाज का सबसे प्रमुख प्लेयर है। भारत के युवा टेक एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स एआई लिमिट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। भारत में हम एक बहुत ही जोश से भरी हुई एआई इनोवेशन स्पिरिट देख रहे हैं। यहां आने से पहले मुझे एआई एक्सपो में जाने का अवसर मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे जीवन बदल सकती है, ये हम इस एक्सपो में देख सकते हैं। युवा एआई इनिशिएटिव के तहत चुने गए युवाओं के आइडियाज को देखकर मुझे ज्यादा खुशी होना बहुत स्वाभाविक भी था। ये युवा टेक्नोलॉजी के द्वारा सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में एआई से जुड़े सॉल्यूशंस की चर्चा तो अब गांव-गांव तक पहुंच रही है। हाल ही में हमने एग्रीकल्चर में एआई चैटबॉट को लॉन्च किया। इससे किसानों को अपने एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट डिटेल्स और गवर्नमेंट स्कीम्स से जुड़े अपडेट्स जानने में मदद मिलेगी। हम एआई की मदद से भारत में अपने हेल्थ सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में भी एआई अहम भूमिका निभा सकती है। फ्रेंड्स, भारत में हमारा विकास मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। हमने एआई फॉर ऑल की भावना से प्रेरित होकर सरकार की नीतियां और प्रोग्राम तैयार किए हैं। हमारा प्रयास है कि हम सोशल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एआई की क्षमताओं का पूरा फायदा उठा सकें। भारत एआई के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज के लिए भी पूरी तरह कमिटेड है। हमने नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया है। हम भारत में एआई मिशन भी लॉन्च करने जा रहे हैं।
इस मिशन का लक्ष्य भारत में एआई कंप्यूट पावर की पर्याप्त क्षमता स्थापित करना है। इससे भारत के स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को और बेहतर सुविधाएं मिलेगी। इस मिशन के तहत एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में एआई एप्लीकेशंस को प्रमोट किया जाएगा। हम अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से एआई स्किल्स को टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे पास नेशनल एआई पोर्टल है जो देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव को बढ़ावा देता है। आपने ऐरावत इनिशिएटिव के बारे में भी सुना होगा। इस कॉमन प्लेटफॉर्म का उपयोग बहुत जल्द सभी रिसर्च लैब, इंडस्ट्री और स्टार्टअप कर सकेंगे। फ्रेंड्स, एआई के साथ हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार टेक्नोलॉजी के टूल से भी कहीं ज्यादा है। एआई हमारे नए भविष्य को गढ़ने का सबसे बड़ा आधार बन रही है। एआई की एक बहुत बड़ी ताकत है लोगों को कनेक्ट करने की उसकी क्षमता। एआई के सही इस्तेमाल से सिर्फ देश की आर्थिक प्रगति ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि ये समानता और सामाजिक न्याय को भी पक्का करता है। इसलिए एआई को अपने भविष्य के लिए अलग प्रकार के एआई की भी जरूरत पड़ेगी। यानी एआई को ऑल इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा, ऑल आइडियाज को अपनाना पड़ेगा। एआई की डेवलपमेंट जर्नी जितनी ज्यादा इंक्लूसिव होगी, उसके परिणाम भी उतने ही ज्यादा इंक्लूसिव आएंगे। हमने देखा है कि पिछली शताब्दी में टेक्नोलॉजी तक अनइक्वल एक्सेस की वजह से समाज में मौजूद असमानताएं और बढ़ गई थी। अब इस तरह की गलती से हमें पूरी मानवता को बचाना है। हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं तो वो इंक्लूजन की दिशा में मल्टीप्लायर के तौर पर काम करती है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य की दिशा भी ह्यूमन वैल्यूज पर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर पूरी तरह निर्भर करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन ये हम पर है कि हम इमोशंस की भी जगह बनाए रखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकती है, लेकिन ये हम पर है कि हम अपने एथिक्स को भी बनाए रखें। इस दिशा में ये मंच विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद कर सकता है। फ्रेंड्स, किसी भी सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए उसे ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टेड बनाना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एआई ट्रांसफॉर्मेटिव तो है ही, लेकिन ये हम पर है कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएं। अगर हम इस्तेमाल हो रहे डेटा और एल्गोरिदम को ट्रांसपेरेंट और फ्री फ्रॉम बायस बना सके तो एक अच्छी शुरुआत होगी।
हमें दुनिया भर के लोगों को यह यकीन दिलाना होगा कि एआई उनके लाभ के लिए है, उनके भले के लिए है। हमें दुनिया के विभिन्न देशों को ये भी विश्वास दिलाना होगा कि इस टेक्नोलॉजी की विकास यात्रा में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। एआई पर ट्रस्ट तब बढ़ेगा जब एआई से जुड़े एथिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंसर्न्स पर ध्यान दिया जाए। उदाहरण के लिए, अगर अपस्किलिंग और रीस्किलिंग एआई के ग्रोथ कर्व का हिस्सा बन जाए तो युवा ये भरोसा कर पाएंगे कि एआई उनके भविष्य की बेहतरी के लिए है। अगर डेटा की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए तो लोग यकीन कर पाएंगे कि एआई उनकी प्राइवेसी में दखल दिए बिना विकास को आगे बढ़ाएगा। अगर ग्लोबल साउथ को यह पता होगा कि एआई के विकास में उनकी भी बड़ी भूमिका होगी तो वो इसे भविष्य के एक रास्ते के रूप में स्वीकार कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एआई के अनेक पॉजिटिव पहलू हैं, लेकिन इससे जुड़ी नेगेटिव बातें भी उतनी ही चिंता का विषय है। एआई 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। डीपफेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में एआई टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास एआई लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। हमें इस विषय पर चर्चा करके एक ठोस प्लान तक पहुंचने की जरूरत है कि कैसे एआई के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। इसलिए ही G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमने रिस्पॉन्सिबल, ह्यूमन सेंट्रिक एआई गवर्नेंस का फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव रखा था। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ने एआई प्रिंसिपल्स के प्रति सभी सदस्य देशों के कमिटमेंट की पुष्टि की है। सभी सदस्यों में एआई के उपयोग से जुड़े खतरों को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग थी। जिस तरह हमारे पास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए समझौते और प्रोटोकॉल्स है, उसी तरह हमें एआई के एथिकल यूज के लिए मिलकर ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। इसमें हाई रिस्क या फ्रंटियर एआई टूल्स की टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए प्रोटोकॉल भी शामिल होगा। इसके लिए कन्विक्शन, कमिटमेंट, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की सबसे अधिक जरूरत है। हमें मिलकर ऐसे कदम उठाने ही होंगे जिससे एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज सुनिश्चित हो सके। आज इस समिट के माध्यम से भारत पूरे वैश्विक जगत का आह्वान करता है कि इस दिशा में हमें अब एक पल भी गंवाना नहीं है। इस साल में अब कुछ ही दिन बचे हैं, नया साल आने ही वाला है। हमें एक तय समय सीमा के भीतर ग्लोबल फ्रेमवर्क को पूरा करना ही होगा। मानवता की रक्षा के लिए ये किया जाना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, एआई सिर्फ
एक नई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ये एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बन गई है। इसलिए हम सभी का मिलकर काम करना बहुत ही आवश्यक है। अगले 2 दिन आप सभी बहुत से विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं तो जब भी किसी एआई एक्सपर्ट से मिलता हूं तो अपने सवाल और सुझाव रोक नहीं पाता। आज आप एक्सपर्ट से बातें करते हुए भी कई बातें मेरे मन में आ रही हैं। हमें ये सोचना होगा कि एआई जनरेटेड इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे क्या डेटा सेट्स हो सकते हैं जिनके उपयोग से हम एआई टूल्स को ट्रेन और टेस्ट कर सकें। किसी एआई टूल को मार्केट में रिलीज करने से पहले कितना टेस्ट करना चाहिए, इस पर भी जरूर सोचना चाहिए। क्या हम कोई सॉफ्टवेयर वाटरमार्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो ये बताएं कि ये इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट एआई जनरेटेड है। इससे जो व्यक्ति एआई जनरेटेड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगा उसे उसकी लिमिटेशंस के बारे में पता रहेगा। एक बात मैं भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिग्गजों से भी कहूंगा, सरकारों के पास योजनाओं से जुड़ा विभिन्न तरह का डेटा होता है। इसका उपयोग एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में कैसे कर सकते हैं? क्या हम ऐसे डेटा का एआई टूल को ट्रेन करने में उपयोग कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसा ऑडिट मैकेनिज्म स्थापित कर सकते हैं जिसमें एआई टूल्स को उसकी क्षमता के आधार पर रेड, येलो या ग्रीन में कैटेगराइज किया जा सके? क्या हम एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्थापित कर सकते हैं जो रेजिलिएंट एम्प्लॉयमेंट को सुनिश्चित करे? क्या हम स्टैंडर्डाइज ग्लोबल एआई एजुकेशन करिकुलम ला सकते हैं? क्या एआई ड्रिवेन फ्यूचर के लिए लोगों को तैयार करने के स्टैंडर्ड तय कर सकते हैं? ऐसे अनेक सवालों पर सरकार से जुड़े लोग और आप सभी एक्सपर्ट्स जरूर विचार करें। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, हजारों बोलियां हैं। डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए एआई की मदद से स्थानीय भाषा में डिजिटल सर्विसेज कैसे उपलब्ध कराई जा सकती हैं, इस बारे में भी सोचें। जो भाषा अब नहीं बोली जाती उसे एआई की मदद से कैसे रिवाइव किया जा सकता है, इस पर भी काम करें। संस्कृत भाषा का नॉलेज बेस और लिटरेचर बहुत समृद्ध है, उसे एआई की मदद से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी सोचें। एआई की मदद से वैदिक मैथमेटिक्स के मिसिंग वॉल्यूम्स को क्या फिर से जोड़ा जा सकता है, इस बारे में भी प्रयास किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि ये समिट आइडियाज एक्सचेंज करने का बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराएगी। मैं चाहता हूं कि इस समिट में शामिल होने वाले हर डेलीगेट के लिए एक ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस साबित हो। अगले 2 दिनों तक आप एआई के विभिन्न पहलू पर गहनता से विचार विमर्श करेंगे। मुझे आशा है कि हमारे पास स्पेसिफिक आउटकम्स होंगे। इन पर अमल करके हम एक रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण का रास्ता जरूर सशक्त करेंगे। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Honorable Prime Minister,
Thank you very much for your insightful address, for your guiding words. We thank Honorable Prime Minister for his gracious presence. Ladies and gentlemen, we hope this summit helps deliver better outcomes and bridges the gap between theory and practice, promoting trust in and adoption of trustworthy artificial intelligence. We thank you all for your presence, and with this we conclude the inaugural ceremony of GPAI 2023. Have a great evening and a great summit ahead. Thank you. तो आप देख रहे थे ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इरादे हैं, बस मौके की तलाश है। उम्मीदें हैं, बस थोड़े से हताश हैं। किस्मत से जूझने की आदत सी पड़ गई है। मंजिल तो है, बस राह की तलाश है। सिर्फ जॉब है, पर मिलते हैं एक्सपर्ट्स द्वारा चुने गए 1 लाख से ज्यादा कंपनीज में पक्के जॉब्स। सही जॉब है, यही जॉब है। अभी डाउनलोड कीजिए। Theatre and travelling. She is married to Sri Ashok Patil and has 2 sons, Aditya and Amit, and a daughter, Tejaswini Patil. Honorable members, on my own and your behalf, I wish her a long, healthy and happy life and to be ever blessed in public life. Papers to be laid on the table. Shri Pankaj Chaudhary. माननीय सभापति जी, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 2 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। डॉक्टर भगवत कराड़। With your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 3 in the revised list of business for today. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 4th December 2023 has agreed without any amendment to the Advocates Amendment Bill 2023, which was passed by the Rajya Sabha at its sitting held on 3rd August 2023. Report of the Committee on Government Assurances, Dr. M. Thambidurai, Shri M. Mohammad Abdullah. I rise to present the 77th report in English and Hindi of the Committee on Government Assurance. Thank you, sir. Honorable members, notice under Rule 267 received from Shri Binoy Vishwam does not merit any admittance. Honorable members, it is not appropriate when a notice has been declined, the same notice is repeated the next day. Matters raised with permission, please. Professor Ram Gopal Yadav request to include a area community in the scheduled caste list of Uttar Pradesh. धन्यवाद श्रीमान उत्तर प्रदेश में अहेरिया जाति ये दलितों में भी दलित के समान। 1949 से पहले तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस वक्त के जॉइंट सेक्रेटरी भंडारकर साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी राज्य सरकारों को कि 1931 और 1941 के सेंसस में जो जातियां अनुसूचित जात में हैं उनकी सूची भेजी जाए, उन्हीं को अनुसूचित जात में रखा जाएगा। श्रीमान 31 के सेंसस में क्रमांक 26 पर अहेरिया, 27 पर बहेलिया और 28 पर पासी अंकित थे, एक ब्लॉक में रखा गया। 41 में भी क्रमांक 59 पर अहेरिया, 60 पर बहेलिया व 5 अन्य जातियां
एक ही ग्रुप में रखी गई। अज्ञात कारणों से बाद में इसमें से अहेरिया को अलग कर दिया गया। शेष जातियां शेड्यूल कास्ट में अब भी हैं। इस जाति के लोगों ने निरंतर प्रयास किए, लेकिन न संसाधन है न बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए इनका किसी ने सुना नहीं। अंत में 16 में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण के विभाग के प्रमुख सचिव ने एक पत्र लिखा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए यहाँ दिल्ली के लिए, और उन्होंने लिखा कि अहेरिया जाति को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश से अहेरिया जाति का सर्वेक्षण एवं निर्जातीय अध्ययन कराया गया है। संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई अध्ययन आख्या में ये उल्लेख किया गया है कि अहेरिया जाति की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं धार्मिक स्थिति को देखते हुए इस जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया जाना उचित है। अहेरिया जाति अनुसूचित जाति की सूची में किए जाने के सभी पात्रताएं एवं अर्हताएं और योग्यताएं रखती है और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति घोषित किए जाने के लिए प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की संस्तुति की जा रही है। इस अतः अनुरोध है कि कृपया उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली अहेरिया जाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु कृपया आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। श्रीमान, सारे शोध के बाद, सारे पैरामीटर्स को पूरा करने के बाद भी इस उत्तर पत्र के जवाब में ये कहा गया कि ये हैं फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती। बिना रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बिना किसी तरह का शोध कराए हुए यहाँ से एक चिट्ठी लिख दी। सर, स्थिति ये है Sri Samirul Islam, concern over delay in disbursement of funds dues to Manrega scheme in West Bengal. Respected Chairman Sir, the issue of Manrega is not only a union government scheme. It is an act established in 2005. The primary focus of this act is on the improvement of rural livelihoods. For around the last 20 years, the scheme has become the lifeline for marginal people in India, with crores of citizens depending on it as this act in their right. The program contributes to rural infrastructure and assets, indirectly addressing the basic demands and employment needs of a large section of people in rural India. Sir, however, my concern today is Manrega and the neglected faced by the poor people of West Bengal. The budget allocation for Manrega has been reduced to rupees 60,000 crore for the current fiscal year 2023 and 24. Bengal stands out as the only instance where the Union Ministry for Rural Development has completely withheld its allocation since 2021. Sir, the total due towards wages for lakhs of job card holders alone is around rupees 3,500 crore, with a total pending due worth rupees 7,000 crore. These figures highlight the situation where the Union government has not sanctioned even a penny for the poor people of Bengal under the scheme named after our father of the nation in the current fiscal year. Consequently, about 20 lakh people dependent on the rural scheme, also known as the 100-day work scheme, are struggling to access their right to income. Their plight sends an adverse message to society and is breaking the backbone of the rural economy in Bengal. Sir, this matter should be a subject of debate in this House, questioning who has the authority to deprive the poor people of the eastern state of Bengal. Sir, I want to remind you, sir, West Bengal is the state that stood first for multiple time in implication of Manrega. Sir, another significant point is that under Manrega,
the government should pay wages to labor within 15 days after the completion of works. Ironically, laborers from Bengal have not received their due even after 2 years. This raises concern about the adherence to the rules and the impact on the life of those dependent on this vital scheme. Thank you, sir. Dr. John Britta's concern over rising concentration of wealth in the hands of few people in India. Sir, we are presiding over multiple level of paradox. On the one count, the Constitution talk about exhorting the governments to bring policies to reduce inequalities. On the other count, the policies of the government are instrumental in surging inequalities. So the Oxfam report, the survival of the richest, talked about 1% of India owning more than 40% of the total wealth, while the bottom 50% share only 3%. We had a strange phenomena during the COVID season, sir. 84% of the people lost their income or reduced their income drastically, whereas the corporates increased their profits, sir. Sir, the government brought the corporate tax and thereby enabling the corporates to benefit at least 2 lakh crore per year. Sir, the Oxfam report adds that wealth of billionaires surged at an unprecedented rate of 2.5 crore rupees per minute, sir. Sir, yesterday only the finance minister replied to the Lok Sabha stated that more than 10 lakh crores have been written off of industries. 2,300 people have been castigated as willful defaulters, eating up more than 2 lakh crores, sir. Sir, we all harp on India being the 5th biggest economy, sir. So statistics and figures can be fake unless we analyze them, sir. So if you just look at the real picture, we are 127th on the ladder, and per capita GDP, we are behind Sri Lanka and even Bangladesh, sir. Okay, sir, on one count, we have increased the numbers. The number of billionaires in the country has gone up, and we are third. It's almost like 169 billionaires in India, sir. Sir, yesterday, the stock exchange rallied. At the same time, there was a rally of Dalits and agriculture workers a stone throw away from Parliament. They were breathing for sustenance, sir. They were demanding for land reforms. They were demanding for a remunerative wage, sir. But our government was looking at the census rally because their friends benefited and their closest friend benefited, and the market cap went more than 12 lakh crores, sir. So this is the paradox on which our country is presiding, sir. So the other day, after the election victory, sir, you must have heard the Honorable Prime Minister saying that it's a victory of poor, the deprived, and the tribals. That was a statement of Honorable Prime Minister. Bhupendra Yadavji, am I correct? Am I correct? Yes, that was a statement. Sir, do we want to make them a vote? Do we want to make Honorable member is directed to put on the table of the House the assertion made by him that friends were benefited during course of the day. Shri A.A. Rahim, concern over increasing loan app crimes and other fraudulent activities in the country. Sir, I am in front of this guest house on behalf of the victims and people who lost their valuable lives due to loan apps crimes. Sir, recently there has been a significant surge in loan app crimes in the country. These crimes involve fraudulent activities committed using digital platforms, primarily through mobile applications offering quick and easy loans. This is a matter of grave concern and requires urgent action, sir. Sir, how could loan apps exploit a large number of people in our country, sir? Sir,
the reasons are increasing unemployment and living expenditure. Sir, common people, especially the youth, are running from bank to bank for ordinary loans. But our nationalized banks are in a competition to provide loans to corporate without granting any loans to the needy masses, sir. Sir, our conventional banking system is denying loans to these poor and needy. This situation will naturally lead the common man to depend on other sources of money. Sir, the main reason for the increase in loan arms is the flawed financial policies of the government. Sir, the situation of people who borrow money through loan arms is very pathetic, sir. Once the payment is late or if they fail to pay the amount demanded by the app owners, the customer is blackmailed, and such mafias commit heinous crimes, including circulating deep fake videos and morphed images by using data extracted from the client during the registration process. Sir, this leads to client suicide and other problems, sir. Sir, what did the union government do the deal with this, sir? Their only response is silence. Sir, I urge the government, sir, expanding small credit schemes through nationalized banks, sir. Sir, strengthening the cooperative sector and promoting credit schemes through cooperative banks are the solutions, sir. Sir, active engagement is also required in the digital arena. Sir, for this awareness should be created among the public, which loans are legitimate and which are not. Sir, should be published at regular intervals. Service providers like Google, iOS shall be regulated in this regard. Apps that violate the law should be identified and punished. Sir, this is a problem that affects the lives of the youth and common people. I urge the government to take urgent action. Thank you, sir. Thank you, Mr. Honorable A. Rahim. Srimati J.B. Mathir Hisam, the subjected demand obliged, to take... Please. But I'm deeply obliged by the opportunity. Let me bring to the attention of this House one of the alarming issues that our country is facing today, that is farmer suicide. Sir, recently 2 farmers in my home state, Kerala, committed suicide. The suicide note of one of the farmers from Kuttanad says, "Ende maranathinu uttaravadi sarkar matram." The government is solely responsible. The government is solely responsible for my death. Sir, why did they commit suicide? Farmers log and sell their paddy to the government through Supplyco, Kerala State Supplies Corporation. Government do not disperse the paddy procurement price to the farmers, and there's an inordinate delay. Why this inordinate delay, sir? It is because instead of making direct payment to the farmers, the government, the Supplyco, have an impractical loan scheme by which the Supplyco will issue paddy receipt sheet, PRS, to the farmers at the time of procurement, and the farmers will have to give this PRS sheet to the bank and they can avail loan, and Supplyco is supposed to make repayment of the loan, which does not happen. And the Supplyco make the payment once the central government allots a share of MSP to the state government. And I want to draw the attention specifically to the fact that central government has failed to give 790 crores, which is due to the state government and which is due to the Supplyco. Now, because of the failure, there is no payment being done to the banks, and due to that, the CIBIL score of the farmers is also affected, and they do not get the money on time. Let me get back to the suicide note, sir. I quote, "It is the money of paddy which I cultivated with my sweat that was given as PRS loan. The government is solely responsible for repaying this loan in arrears. Banks are not disbursing new loans because of the government has defaulted on it. It is because of this I am taking my life. Therefore, it is only the government which is responsible for my death," unquote.
The words in the suicide note is a direct reflection of the plight of the farmers our country and state is facing today. How many more lives of farmers will have to be lost for the government to wake up and make the payment which is rightfully due to the farmers? Also, paddy farmers in the state they are selling their products to the private rice mill owners at a much lower cost, which is about 20% of the farmers they are doing that. If the government is giving, Time is already over, it's not going on record now, please. Not going on record, please. Honorable Sri Babu Bhai, Jaisang Bhai Desai. Honorable members, please take your seat, Mr. John Britos. ऑनरेबल मेंबर्स, सिर्फ आप 3 मिनट बोलते हैं वही रिकॉर्ड पे जाता है, उससे अधिक बोलते हैं रिकॉर्ड पे नहीं जाता. प्लीज कन्फाइन योरसेल्फ टू 3 मिनट्स. ऑनरेबल श्री बाबू भाई जयसंग भाई देसाई. ऑनरेबल श्री बाबू भाई जयसंग भाई देसाई, कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, नॉट प्रेजेंट. ऑनरेबल श्री त्रिचू शिवाजी, रिक्वेस्ट टू एलोकेट एडिक्वेट टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु for relief to people suffering due to cyclone rains. Sri P. Wilson will associate. Babu Bhai, I am going by serial number. 5th was J.B. Mathur ji, 6th was Babu Bhai Jason Bhai Desai, 7th Tiruchu Shivaji. Please. Please. Honorable Tiruchu Shivaji. Mic of Honorable Tiruchu Shivaji, please, it's on now. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, the torrential rains, which is incessant for the past 4 days, has devastated Chennai, Thiruvallur, Shengalpet, Kanjipuram and Ranipet in Tamil Nadu. Sir, such a rain Tamil Nadu has witnessed only half a century before. The Michang cyclone which triggered these rains has now moved to Andhra Pradesh, but the impact is so worse that the people of Tamil Nadu are put to very big hardships. Sir, the roads have become rivers because of the non-stop running waters, and the rivers have become like seas. The Kuvam and Adayar, which used to confluence with the sea, were not able to because sea water was gushing into the river, and all the water bodies are overflowing. Many tanks have been breached. Roads have been damaged to the extreme condition. Everywhere it is eroded because of the running water. However best the infrastructure of a city, sir, the fury of the nature is such hard and much worse that nothing can withstand that. So all the roads have been eroded, and the essential needs of the people were not able to be supplied, though the milk vendors or the medical facilities can move, but the roads were not accessible. And the state government, under the captainship of Mr. M.K. Stalin, the Chief Minister, the whole cabinet was on their heels. The corporation officials, workers, doctors, sanitation workers, fire service, rescue team, electricity board, everyone were working in a war-footed manner, sir. And sir, the foremost responsibility of a state government is to safeguard the lives of the people. So as a precautionary measures, electricity was suspended as a temporary measure which saved hundreds of people who would have met with electrocuted accidents. So along with that, essential needs were also supplied by the state government. But the impact is so worse, sir, that it cannot be repaired at the earliest. Sir, now that yesterday the Honorable Home Minister has had a telephonic conversation with the Chief Minister and he has appraised the situation, and now that the state government has requested for an interim relief of 5,000 crores, sir. So I urge the union government, considering the condition of Tamil Nadu and the 5 districts in the capital, kindly release the interim relief of 5,000 crore as an initial interim relief, which would help the state government in their efforts to safeguard the people of Tamil Nadu. Thank you very much. Thank you, Honorable Tiruchu Shivaji. You have already associated yourself. Yes, you have associated, people say. You have associated, the time is over now. Thank you, people say.
Honorable Shri Ajay Pratap Singh ji, issue of distribution in PM Garib Kalyan Ann Yojana. सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान मिलेट्स की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मिलेट्स का नवीन नामकरण हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न के रूप में किया है। वर्ष 2023 को भारत के प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिलेट वर्ष घोषित किया है। प्रधानमंत्री जी ने भारत को मिलेट्स को विश्व केंद्र के रूप में घोषित किया है। मिलेट्स में प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, मेजरी इत्यादि फसलों को शामिल किया जाता है। इन फसलों का जो खेती है लगभग भारत के 12 राज्यों में की जाती है। अकेले बाजरा की खेती ही भारत के लगभग 2.5 करोड़ किसान करते हैं। भारत में जो हमारी भोजन की थाली है, उस भोजन की थाली में पहले लगभग प्रति व्यक्ति प्रति माह 3 किलो मिलेट्स की खपत होती थी। अब ये बढ़कर 14 किलो तक पहुंच गई है। हमारे यहाँ 5 से 6% जो है लोग इसका उपयोग करते हैं और प्रधानमंत्री जी के कारण लगभग मिलेट्स 30% तक वृद्धि हुई है। अगर हम भूख के आधार पर दुनिया का विभाजन करें तो एक ग्लोबल साउथ है जहां पर भोजन की समस्या है और दूसरा ग्लोबल नॉर्थ है जहां पर भोजन की प्रचुरता के कारण बीमारियों का सामना कर रहे हैं। इसका समाधान भी इस मिलेट्स में ही निहित है। मिलेट्स की खेती के माध्यम से हमारे किसानों की आर्थिक प्रगति का भी रास्ता प्रशस्त होता है और मिलेट्स की जो खेती है ये कम पानी की खेती होती है। 1-2 पानी में ही इसका उत्पादन हो जाता है और इसके कारण जो हमारा भूजल का जो स्तर है जो घटता जा रहा है उसकी भी सुरक्षा की जा सकती है। संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिलेट्स पोषण युक्त है, मिलेट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हम मिलेट्स उत्पादों को शामिल करें। इसके माध्यम से हम भारतवासियों के स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकेंगे। मिलेट्स की अधिक से अधिक खपत होने के कारण किसान भी इसके उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके माध्यम से गांव की भी जो आर्थिक समृद्धि है उसका भी मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। धन्यवाद माननीय अजय प्रताप जी। ऑनरेबल श्री वाइको, concern over frequent attacks and arrest of Indian fishermen by Sri Lankan Navy. Mr. Deputy Chairman, sir, thank you very much for the opportunity given to me. Sir, Sri Lankan Navy is continuously attacking our Tamil fishermen. About 800 fishermen were shot dead and thousands of fishermen were brutally attacked and their boats and fishing trawlers were damaged and fishing nets destroyed in the past. They have started capturing the boats and put them into action. Unfortunately, it has become a real story. There have been several incidents of Sri Lankan Navy personnel even firing at Indian fishermen in the Pak Strait and seizing their boats, damaging their boats and high-handedness by the Sri Lankan forces. Recently, 22 fishermen were arrested by Sri Lankan Navy. The frequent arrest and seizure of boats had shattered the livelihood of many fishermen. I would urge upon the Union government to take urgent steps to secure release of all the fishermen and their boats unconditionally. The government should also put diplomatic pressure on the Sri Lankan government for giving compensation and solatium to the next of kin who were shot dead and boats damaged by the Sri Lankan Navy. They should hold a high-level talk to find a permanent solution to this non-stop harassment to our fishermen by the Sri Lankan Navy. So Tamil Nadu fishermen, are they not the citizens of India? If they are citizens of India, what Navy is doing there? It is sitting like a lame duck in the Bay of Bengal. Thank you. Honorable Sri GVL Narsim Rao, concern over attempts to ridicule Sanatan Dharma. Please.
Thank you, sir. Sir, a minister in the state government of Tamil Nadu indulged in hate speech against Sanatan Dharma and Hindu religion. I quote what he said. Sir, Sanatan Dharma is like malaria and dengue, and so it must be eradicated and not opposed. These are statements by a minister in a state government. And sir, another minister in the same state government, higher education minister, said the purpose of formation of INDIA alliance is for the eradication of Sanatan Dharma. This is the agenda. Is this the kind of anti-India agenda that they want to pursue? So, another minister in Karnataka government, who also happens to be the son of Congress president, who is also a leader of the opposition in Rajya Sabha, he supported those comments. This is the agenda of INDIA alliance. Sir, this constitutes hate speech. Honorable Supreme Court in its directions clearly stated that offences under 295A, under 505, 153A, 153B, they all constitute hate speech. Sir, deliberate and a malified act intended to outrage religious sentiments. This is what it was intended for. There was also an attempt to create public mischief. Therefore, I call upon the state government, Tamil Nadu, to, on its own, register FIR against the same ministers who spoke against Sanatan Dharma, and also dismiss these ministers from the state government, because what they have publicly stated is the violation of the oath they have taken under the Constitution. The Constitution allows every religion, every member, every sect to practice its faith and to even propagate it. And here you have ministers in the state governments who are campaigning against Sanatan Dharma and calling for its eradication. So therefore, sir, I appeal that cases should be booked against the concerned ministers and they must be dismissed without any further delay. So this is nothing but an act to destroy the fabric of religion in India. This is to destroy social fabric. If this is an agenda for any political party, that will be dangerous to India. Therefore, I appeal, I demand an apology. I demand an apology from the... Not going on record now. Time is over. Your time is over, please. Honorable Binay Biswam. Honorable Binay Biswam. Please. Honorable Binay Biswam, please. Honorable Binay Biswam. Your subject is, please, demand to provide decent wages along with the meaningful engagement stems to all government-sponsored distance workers. Make the house in order. Please. Make the house in order, sir. Please speak, it will be in order. Please speak. Make the house in order, sir, please. Please speak. Please, there is no discussion. Honorable Tiruchi Sivaji, please take your seat. Please take your seat. All the members who are standing, please take your seat. You please speak. So I begin with the house. Please, Binay Biswamji, please speak. Yes, sir. Thank you, sir. Please. Thank you, sir. Please, Binay Biswamji, please speak. Binay Biswam, please. He totally give the false So I am going on another name. Please, Binay Biswamji, then you, yes, please, sir. Please. Now my time begins. Yes. Sir, I stand before you. Please, nobody, please speak. Sir, please begin my time now. It has already begun. The time has already begun. No, please. no, just now I began. Please. Speak, please speak. Sir, please. I stand before you to bring to the plight of the scheme workers of the country. They are in lakhs in numbers. They belong to the ASHA workers, Anganwadi workers, and midday meal workers. Sir, the government and this house was their duty to look deep into their living conditions. Sir, those people are not living. They are simply surviving on paltry wages. We talk about them in high words.
like global health leaders, warriors for the country. Sometimes we name them during COVID days. But when the livelihood comes, we always forget them. High time to think about them. Sir, the ASHA workers, the accredited social health activists, they are doing immense service for the nation. In every field of life, they are the first point of healthcare, social security and everything. But their concerns are not always. So Anganwadi workers, they are the first meeting point for the children of the country. They teach them, they feed them, and they open their eyes to the world. But what we do for them? Nothing to them, sir. The same way, the midday workers, meal workers, midday meal, they work for the food security also. But lakhs of them are counting their days for their decent wages, sir. High time this government should pay attention to them. We call them as volunteers. Calling them volunteers, we deny them the right of the workers. We have to treat them as workers. We have to see that their wages are fixed, a decent wages to live. And we have to treat them and make their engagement conditions a decent one. Not going on record now. Please. Honorable Sri Sushil Kumar Modi, concerned over increasing incidents of suicide, deaths of students in higher educational institutes. Honorable Sushil Kumar Modi. उपसभापति महोदय, राजस्थान के कोटा में और इस वर्ष 26वां आत्महत्या की घटना घट चुकी है। पिछले एक साल में और आत्महत्या की 26 घटना और कोटा राजस्थान में घट चुकी है। और ये केवल इसी वर्ष नहीं, पिछले 5-6 वर्षों में प्रति वर्ष 25 से 30 नौजवान और आत्महत्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो IIT, IIM, NIIT और जो देश के सर्वोच्च इंजीनियरिंग संस्थान हैं, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर भी प्रति वर्ष बड़ी संख्या में नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार के लिए चिंता का विषय, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान आत्महत्या करने के लिए क्यों बाध्य हो रहे हैं। कोटा राजस्थान में जो लड़के मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए आते हैं, उन पर इतना प्रेशर होता है, इतना दबाव होता है उत्तीर्ण होने के लिए कि वो लोग आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और उसी प्रकार IIT, IIM वगैरह जो उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, वहाँ पर भी बढ़ती हुई आत्महत्या की घटना ये चिंता का विषय है। मैं सरकारों से ये मांग करता हूँ कि एक आयोग का गठन किया जाए जो इस बात की जांच करे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान कोचिंग संस्थानों में आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, उनकी बहाली की जाए ताकि वैसे लड़के जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उनकी वो काउंसलिंग कर सके। ऐसे केंद्रों में मेंटल हेल्थ क्लिनिक की भी स्थापना की जाए ताकि जो लड़के डिप्रेशन में हैं वो लड़के वहाँ जाकर अपना इलाज करा सकें या काउंसलिंग प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ जो IIT, IIM वगैरह के जो कोर्सेज हैं, खास करके कोचिंग के, उसके बारे में पुनर्विचार किया जाए कि इतना प्रेशर है और इस प्रकार का कठिन सिलेबस है कि उसको उत्तीर्ण होना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो सरकार को उसके पूरे सिलेबस को भी रीडिज़ाइन करने के बारे में विचार करना चाहिए। और ख़ास करके कोटा और अन्य कोचिंग संस्थानों में हर किसी का जो नामांकन हो रहा है, पैसे के लिए कोचिंग संस्थान जो भी लड़के वहाँ पर आते हैं उनका वो एडमिशन ले लेते क्योंकि उससे उनको पैसा मिलता है। तो उसके बारे में भी और रोक लगाई जाए। जो बहुत मेधावी छात्र हैं, जो टाइम इज थैंक यू।
Dr. Lakshmikant Bajpayee ji, the issue of intervention by big houses in MSME sector. क्या विषय है जी? Issue of intervention by big business houses in MSME sector. पता ही नहीं हमें तो, जीरो आवर की सूची में भी नहीं है। आपका जीरो आवर में यही लिस्टेड है? नहीं लिस्टेड है। Dr. L. Hanumanthaiya demand to take preventive steps to address rising problems of malnutrition and anemia across the country. Please. माननीय सदस्यगण, जिनका नाम सूची में है उसी अनुसार मैं बुला रहा हूँ. प्लीज टेक योर सीट. सर, जिनके नाम नहीं है मैं नहीं बुला रहा हूँ, जिनके नाम है वही बुला रहा हूँ. प्लीज. डॉक्टर एल हनुमंतैया. सर, थैंक यू चेयरमैन सर. प्लीज. I rise to Madam, 1 minute. Sir, I rise today to urgently address the pervasive issues of malnutrition and anemia plaguing millions of people across the country, sir. Sir, despite economic progress, our nation grapples with alarming rates, particularly affecting vulnerable population like children, women, and the marginalized sections of the society, sir. Sir, in the latest NFHS report, data 1921, the prevalence of anemia has shown a significant increase, with children aged 6 months to 5 years experiencing a jump from 59% to 67%, sir. Sir, this is an alarming state of affairs. Sir, women especially in rural areas, high rates of anemia adversely affecting maternal health and contributing to pregnancy complications. Sir, an increase in the anemia prevalence from 53% to 57% in all women aged between 15 years to 49 years seen, and 50.4% to 52.2% in pregnant women rooted in poverty, lack of education, inadequate health care, and unequal resource distribution or malnutrition problems. Sir, factors such as food insecurity, limited access to clean water, and inefficient healthcare infrastructure contribute to unmet nutritional needs. Sir, my request to the government, addressing these issues is not only a social responsibility, but a prerequisite for a thriving and resilient nation. Sir, the consequences extend beyond individual suffering, impacting the workforce, educational outcomes, and overall economic productivity of the nation. Sir, therefore, I urge the Ministry of Health and Family Welfare to take immediate steps to address the rising problems of malnutrition and anemia, especially among women and children across the country. Sir, let me unite in our commitment to building a healthier, strong India. Time is over, Hanumanthaiya ji. Time is over. Thank you, Hanumanthaiya ji. Honorable members, in 0 hour, matters are raised with permission of Honorable Chairman. Merely presence in ballot does not mean admittance. Further matters already raised are not included again. Please. Dr. Lakshmikant Bajpayee. माननीय उपसभापति जी, प्लीज. मेरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है और समाज के उन सामान्य वर्ग के लोगों के प्रति है जो गांव में और छोटे छोटे शहरों और कस्बों में सुनार का दर्जी का काम करते हैं. धीरे धीरे एमएसएमई सेक्टर में भी बड़े घरानों का प्रवेश योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है. ये ठीक है कि हम किसी को व्यवसाय करने से नहीं रोक सकते, लेकिन किसी बड़े घराने अगर तनिष्क के नाम से टाटा करेगा जेवर का व्यापार, तो गरीब सुनार या शराब जो शहरों में और कस्बों में बैठे हैं वो क्या काम करेंगे. इसी प्रकार कपड़े को सिलने का काम जो है
वो भी टाटा बड़े घराने ले जा रहे हैं। मेरा इस प्रश्न के माध्यम से सरकार से ये निवेदन है कि ये ठीक है कि किसी को रोजगार करने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर का बचाव हो सके और एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आने वाले छोटे कारीगर, छोटे व्यापारी बचे रह सकें, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। धन्यवाद। माननीय श्री बाबूभाई देसाई, माननीय बाबूभाई देसाई, प्लीज। महोदय, आज आपने मुझे संसद बनने के बाद उसमें प्रथम बोलने का अवसर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। आज मैं हमारे समय की एक तत्काल और निर्णायक चुनौती जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के लिए उसके सामने खड़ा हूँ। हमारा यह मानवीय गतिविधियों के कारण अभूतपूर्व परिवर्तनों से गुजर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि, मौसम के पैटर्न में बदलाव और असंख्य परिस्थितियों व्यवस्थापन उत्पन्न हुए हैं। वैज्ञानिक सहमति स्पष्ट है, जलवायु परिवर्तन हमारे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और जीवन जैसी शैली के लिए गंभीर खतरा है। हमें सिर्फ फर्क पिघलने से अधिक लगातार और गंभीर मौसम की घटनाओं और जैव विविधता के नुकसान के गवाह है। मैं यह सहज चेतावनियों नहीं है, ये कठोर वास्तविकता है और जो हमें तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई करने की मांग करती है। भावी पीढ़ियों के लिए यही की सुरक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें स्थायी ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव करना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस परिवर्तन को कम करना चाहिए और जिम्मेदार खपत और उत्पादन के बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए सभी क्षेत्रों, सीमाओं और राजनैतिक विचारधाराओं में सहयोग की आवश्यकता है। कानून निर्माताओं के रूप में हमारे पास ऐसी नीतियाँ बनाने की शक्ति है जो नवाचार की प्रोत्साहन करती है, नवीनीकरण ऊर्जा में निवेश करती है और उद्योगों के उनके पर्यावरण प्रभाव के लिए जवाबदेह बनाती है। आइए हम अल्पकालिक लाभ से अधिक अपने ग्रह की भलाई को प्राथमिकता है और एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करें यहाँ स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्थिर जलवायु सुनिश्चित हो। निष्क्रियता में कोई विकल्प नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। कंसर्न ओवर मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट डीपफेक्स। माननीय बिप्लब कुमार देव, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री मुजीबुल्ला खान जी, डिमांड टू स्टार्ट न्यू रूट फॉर वंदे भारत। मुजीबुल्ला खान जी सर, प्लीज, आपका समय शुरू हो गया है। Thank you, sir. In order to meet Odisha's demand for connectivity, very necessary for Odisha to have great connectivity various regions, and witness that Vande Bharat train between Puri and Howrah in West Bengal, along with a recent addition of a train between Puri and Raulkela connectivity, the same massive practical and reading towards it is impressive further Vande Bharat Express train to be introduced in Odisha. The state of Odisha has suffered a neglect from the central government as reflected by its poor rail connectivity. Further, the degree of connectivity is spread across the region of Odisha. For instance, there are very few express trains connecting between Odisha and Bhubaneswar. Between Odisha and Bhubaneswar, both the express train mentioned above by the track towards the another part of Odisha. The proposal for a new connectivity in running between Bhubaneswar and Hyderabad
by some having a Vande Bharat between two hubs will the travel time reduce travel time 7 hours, a major locations. This new introduction will lead to further connectivities of passengers, will give a much needed push a connectivity. Thank you. Thank you. धन्यवाद श्री मुजीबुल्लाह खान जी. माननीय श्रीमती संगीता यादव, कंसर्न ओवर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मेंटली चैलेंज्ड पीपल. माननीय संगीता यादव जी, माननीय संगीता यादव जी, प्लीज. नहीं, जीरो आवर नहीं लगा. कंसर्न ओवर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मेंटली चैलेंज्ड पीपल. माननीय सदस्य, आप जो आप देते हैं यहाँ बोलने के लिए, उन विषय पे ध्यान रखें और बोलें प्लीज. सॉरी सर, आज मैंने देखा नहीं. कल लगा था मेरा. धन्यवाद. डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस टू लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी. माननीय उपसभापति महोदय, भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि व्यक्ति काम के बदले में वेतन पाए और समान काम के बदले में समान वेतन पाए. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश में जनप्रतिनिधियों के साथ ही दोहरा आचरण किया जा रहा है. महोदय, केंद्र के मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, इन सब ने संवैधानिक तरीके से और कानून बना करके अपने अपने वेतन की, अपने अपने भत्ते की और अपने अपने पेंशन की व्यवस्था की हुई है. ये व्यवस्था संविधान प्रबद्ध माध्यमों से हम लोगों ने की है. लेकिन दुखद है, इस देश में लाखों की संख्या में ऐसे जमीनी जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के और मेयर तक, जो जमीनी धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं. विकास की जो भी योजनाएं हम यहाँ बनाते हैं, जमीनी धरातल पर उनको लागू करने का काम वही करते हैं. वो प्रत्यक्ष जनता के संबंध में रहते हैं. लगातार जन समस्याओं को लेकर के उन्हें 24 घंटे काम करना होता है. हमने इन बड़े जनप्रतिनिधियों के लिए संविधान के तौर तरीके से वेतन की, भत्ते की और पेंशन की व्यवस्था कर दी. भारत अकेला ऐसा देश होगा शायद जिसने संवैधानिक रूप से 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया और स्थानीय निकायों को चलाने के लिए जनप्रतिनिधियों की संवैधानिक रूप से व्यवस्था की. उनके अधिकार दिए, उनके दायित्व दिए, लेकिन जो कुछ उनको नहीं दिया वह था उनका वेतन नहीं दिया, उनका भत्ता नहीं दिया और उनका पेंशन नहीं दिया. मैं जानना चाहता हूं इस सदन से, इस सौतेले और इस दोहरे आचरण का आधार क्या है? क्या वह जो छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या उनके परिवार नहीं होते, उनके माँ बाप नहीं होते, उन्हें अपने माँ बाप की चिंता नहीं करनी होती, अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी होती? आखिर किन कारणों से आज तक हमने संवैधानिक रूप से उनके लिए यह व्यवस्था नहीं की? स्थानीय आधार पर सरकारें, मुख्यमंत्री दया की तरह उनको वेतन, उनको भत्ता देते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनको नियंत्रित करती है. यह दोहरा आचरण इस देश में समाप्त होना चाहिए. अगर हम संविधान संशोधन लेकर के जनप्रतिनिधियों को लाए थे तो हमें उस कानून में यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम उन्हें आर्थिक रूप से समस्त बनाते. हमने नहीं किया. हमने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है. हमने उन्हें अधिकारियों के आधार पर छोड़ दिया है. और इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी अपेक्षा है, सरकार संविधान संशोधन करे 73वें और 74वें संशोधन में और अपने सारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए वेतन की, भत्ते की और नॉट गोइंग ऑन. थैंक यू. माननीय श्री विक्रमजीत सिंह साहनी जी, डिमांड टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म नेशनल लेवल पैरामीटर फॉर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स. माननीय विक्रमजीत सिंह साहनी जी, नॉट प्रेजेंट. माननीय सदस्य
जीरो आवर आप देते हैं तो उसके महत्व को समझना भी चाहिए, उस वक्त मौजूद भी रहना चाहिए। अगर हाउस में है तब आपका ध्यान उस पर नहीं है तो ये आपके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय। बैठे आप, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं, आप जानते हैं रूल्स को राघव जी, फिर भी आप पूछें प्लीज। डॉक्टर फौजिया खान जी रिक्वेस्ट टू एड्रेस द इश्यू ऑफ मिसिंग वीमेन इन इंडिया। डॉक्टर फौजिया खान जी प्लीज। Thank you, sir. Sir, the issue of missing women in the country is alarming, with 10,61,648 women alone in the years 18 and above, and 2,50,430 girls below 18 years have reported missing between 2019 and 2021. Over 2 lakh women went missing in the state of Madhya Pradesh alone between the year 2019 and 2021, sir. Yet, the reasons have remained undisclosed. Sir, the suspected reasons behind the disappearance of these women are diverse, like trafficking, trade, and in minuscule cases, elopement. Tackling this issue requires collective action on various fronts. Strengthening law enforcement to identify trafficking networks, enhancing border control, establishing a database for accurate identification of the reasons for the disappearances. Additionally, the numbers have come as a surprise to many, indicating the lack of awareness of the incidents of disappearance of women. Therefore, public awareness campaigns, community involvement, educational programs can help prevent vulnerable individuals from falling prey to traffickers. Despite designated stop centers, the unprecedented increase in numbers suggests the possibility of organized criminal activities, sir. A recommendation to address the issue of missing women involves the establishment and maintenance of a comprehensive register by the government documenting details of every woman reported missing. This register should serve as a centralized database, enabling efficiency tracking and tracing efforts. Sir, additionally, specialized teams should be formed to investigate each case with a focus on identifying potential foul play. These teams could comprise experts from law enforcement, social services, and legal professionals to ensure a thorough and coordinated approach in understanding the circumstances behind each disappearance to ensure accountability and effectiveness. Sir, this issue is of grave concern. How can women go missing like this? Just without any reason, women missing is a grave issue, sir. The government must pay attention to this. Sri Rajiv Shukla, concern over poor state of under trials and the imperative for judicial reforms. Not present. Sri Kailash Soni, demand to add biography of Sri Jayaprakash Narayan in academic syllabus. आपके माध्यम से मैं सरकार के समक्ष एक देश के महत्वपूर्ण मुद्दे को रखना चाहता हूं। इस देश के मूर्धन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी, देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सर्वोदयी नेता, दुनिया की सभी देशों की समाज व्यवस्था, वहां की राजनीतिक विचारों को नजदीक से देखने वाले, पाश्चात्य जगत के लोगों को, विशेषकर श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए संघर्ष करने वाले, देश की सभी विचारधाराओं के ज्ञाता, उन्हें नजदीक से जीने वाले, उन विचारों को जीने वाले, लोकतंत्र के शोधकर्ता, प्रयोगशाला रहे, हिंदुस्तान की दूसरी आजादी, आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष करने वाले। Question hour. Question number 16, Sri Sanjay Raut.
Honorable Minister. Supplementary one, Shri Sanjay Raut. सर आजकल मैं देख रहा हूं बैंकों में, देश भर के बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड्स, फर्जी के केस सामने आ रहे हैं। लेकिन उसमें अगर सरकार की एजेंसी भी शामिल हो तो चिंता की विषय है। सर, केंद्र सरकार ने मल्टीपल इंश्योरेंस और पेंशन की बहुत सी योजनाएं शुरू की है आम जनता के लिए, लेकिन जो तथ्य, जो फैक्ट सामने आया है, मुझे लगता है ये इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन स्कीम, ये बिगेस्ट बैंक का स्कैम उसमें नजर आ रहा है। संजय जी, आस्क योर पॉइंटेड क्वेश्चन। सर, ये जो बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है, मेरी जानकारी से जब कोई ग्राहक 10-15 साल के लिए पॉलिसी साइन करता है तो प्रीमियम के लिए सहमति भी देता है, जो अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है। अधिकांश ग्राहक 2 से 3 वर्षों में के बाद प्रीमियम का भुगतान बंद कर देता है, जिससे इंश्योरेंस कंपनियों के पास बहुत सारा अनक्लेम फंड पड़ा हुआ है। और बैंक दावा करता है कि ये जो आकस्मिक बीमा कवरेज है, जो